It is very important question when we say ownership. It has three ingredients: right to possess, number one; right to use, number two; right to dispose of, number three. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. As my viewers are aware of this very fact, that on Sunday we discuss our problems. So there are many letters before me in which viewers have asked many questions. The first question which is before me is that Mr. Akram has asked, he is going to retire and his department has had a query, a sort of objection in connection with my date of birth. There is a difference in my date of birth as envisaged in matriculate certificate and that of identity card. What should I do under the circumstances? And the department has asked to go to the court of law for having decision in connection with the material question. Yes, you will have to go to the court of law in civil court by instituting a declaratory suit, and you will have to produce all the testimonials whatsoever in connection with your matter. The Honorable Civil Court will summon the very department, the defendant, to give their own version. So in this way, you will be giving your witnesses oral evidence as well as documentary, and the same oral and documentary evidence will be given by the department, the defendant. So if you will be able to produce all the testimonials, the document, the oral evidence whatsoever, the court will give decree and judgment in favor of you. After having had the certified copies thereof, you can approach the very department so as to cope with the situation. I hope that you have had my answer to the questions. ये एक छोटा सा सवाल है जो अकरम साहब ने पूछा है। वो फरमाते हैं कि वो रिटायर्ड हो रहे हैं, जबकि उनके मैट्रिक की सनद और शनाख्ती कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है, और डिपार्टमेंट ने उन्हें कहा है कि आप अदालत जाएं, वहाँ से फ़ैसला लेकर आएँ, वरना आपके सारा रिटायरमेंट का सिलसिला है ये रुक जाएगा। तो वो फरमाते हैं कि मेरे पास क्या चाराकार है, मैं क्या करूँ। तो अभी मैंने इंग्लिश लेक्चर में इसकी रेमेडी चाराकार जो है वो बताया है। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और डेक्लरेटरी सूट, जिसे दावा इस्तकरार हक़ कहते हैं, वो करना पड़ेगा। उसके बाद सिविल अदालत यानी अदालत दीवानी आपके डिपार्टमेंट वालों को भी बुलाएगी। आपकी जो भी ज़बानी और दस्तावेज़ी शहादत है आप पेश करेंगे। उसके बाद
आपके डिपार्टमेंट को भी कहा जाएगा, तो तमाम तर गवाहियाँ और शहादतें सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है वो आपके हक़ में फ़ैसला व डिग्री फरमा देगी। उसके बाद आप उनकी मुसद्दका नकूल लेकर डिपार्टमेंट जाएंगे तो आपका मैटर रिज़ॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। The next question which is before me is that Mr. Aslam has asked, he purchased landed property even before 8 years ago, but the Patwari has not entered my possession in his khasra girdari. What should he do under the circumstances? It is very important question. When we say ownership, it has 3 ingredients: right to possess, number 1; right to use, number 2; right to dispose of, number 3. No doubt you have become a legal owner by having had registered deed in your favor. If most of the period has been passed and the Patwari has refused to do so, you are at liberty to approach Tehsildar, Assistant Commissioner or the Collector. You haven't mentioned any specific period, so you will have to go to institute application before District Collector, mentioning all the documents for the Malkiyat, mutation, copy of mutation, and the evidence in connection with your possession. No doubt it will take some time, and the District Collector will direct the concerned Patwari to visit the spot and enter the possession. After it is entered, then Patwari is bound to issue the copy of Khasra Girdari. So after every 6 months, you can have that very copy of Khasra Girdari. Now you will be legal possessor as you have been entered legally. ये एक छोटा सा सवाल इन्होंने पूछा है कि इन्होंने कोई जायदाद खरीदी लेकिन पटवारी उनका कब्ज़ा अपने रजिस्टर में दर्ज नहीं कर रहा। अब इन्होंने ये स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि कितना ड्यूरेशन गुजर गया है, कितना अरसा गुजर गया है। कुछ अरसे तक पटवारी को खुद पावर होती है कि वो कब्ज़ा खुद इंटर कर सकता है। उसके बाद यही पावर फिर तहसीलदार के पास होती है कि इतने अरसे बाद उसके पास पावर होती है कि वो कब्ज़ा इंटर कर सकता है। उसके बाद यही पावर असिस्टेंट कमिश्नर को होती है और फिर यही पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को होती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उसको फुल पावर होती है कि वो देखे कि ये कब्ज़ा क्यों एंटर ना हुआ। आप एप्लीकेशन देंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्चुअली इसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, इसी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं।
اسی کو رجسٹرار بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کی درخواست کے بعد وہ پھر رپورٹ منگوائے گا، وہ اے سی کو ڈائریکٹ کرے گا، اے سی تحصیلدار کو ڈائریکٹ کرے گا، تحصیلدار قانون گو کو ڈائریکٹ کرے گا، قانون گو جو ہے پھر وہ پٹواری کو ڈائریکٹ کرے گا، پٹواری پھر سپاٹ ویریفیکیشن کرے گا، وہاں جا کر سپاٹ پہ موقع پر جا کے وہ لوگوں کے بیانات لے گا اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے پوچھے گا، تو اس کی روشنی میں پھر وہ رپورٹ دے گا۔ اگر واقعی پوزیشن آپ کا ہوا تو پھر وہی رپورٹیں ساری نیچے سے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس آئیں گی اور وہ آرڈر پاس کر دے گا کہ جناب یہ قبضہ اسی کا تھا اور یہ پٹواری نے درج کیوں نہیں کیا، اور وہ ڈائریکشن دے گا کہ آئندہ باقاعدہ قبضہ اس کا نوٹ پٹواری کرتا رہے۔